Next, we will use this high performance concrete for the pavements. 1.2 kilometer tunnel in the Katras Ghat bypass stretch of the Pune and Satara portion of the NH4, package number 4, NHIA, that means National Highway Authority of India. HPC, high performance concrete, was adapted to ensure the minimum maintenance, as I told you yesterday. That means in case of the tunnel is came in that Katraj Ghat bypass, at that case, they don't need any minimum maintenance up to the coming 30 years. That means that the design life of the rigid pavements is generally 30 years and the design life of the flexible pavements is generally 15 years. So they don't want the make the maintenance for the coming 30 years. So at that case, they have used the M45 grade concrete. Now you see the difference. This is not a high grade, high strength concrete. M45 means this is normal concrete. That means structural concrete only. Up to M60, we can say that M55, you can say that the normal concrete. Even though they have used the normal concrete of M45 grade, but this is act as a high performance concrete. So you have to conclude here that there is no need of the high strength at all. There is no need for the high strength for the high performance. हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना जरूरत नहीं है. इवन दो इफ यू गो फॉर M30 ग्रेड आल्सो दैट विल वर्क एज ए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट. नेक्स्ट OPC 43 grade cement, 350 kg per cubic meter was used, and silica fume is 28 kg. This is very high. That means 8% by weight of the cement. Normally the silica fume normal range is 4 to 7%. 4 to 7%. Exceptional case, you can go up to the 8%, 10%. Beyond that, you can, nobody will impress if you are using the silica fume more than the 10%. But this work, that means this tunnel work, they have used the 8% maximum limit of the silica fume. And water cement ratio 0.39, 39 has used. That means M45 grade, they went to fund. And sand coarse aggregate ratio and dosage of the superplasters about the 1% weight of the cement. Superplasters, as I told you in the previous class, in the research purpose, you can go beyond the 2%, 3% weight of the cement. But normally in the site, the superplaster usage after 1.5, nobody will impress it. Okay, so field engineers generally they will keep the superplaster dosage as 1%, 1.2%, 1.5% max. Suppose if you go to the research purpose, any few research papers only I have seen the 3%, 3.5%, 4% also I have seen. But the results are negative side. That means up to medicine, if you are taking the medicine, up to some extent, the health will be good. If you are taking the beyond the some limit, the medicine is also become as a poison. So similar way, if you are using the superplasticizer, then the compatibility will be going in the negative side. So don't go beyond the 1.5, 2% max. And fixed right results or desired workability of the concrete. Advantage of the high performance concrete. What are the various advantages we will see in the high performance concrete has been used in the pavements? Increased the abrasion resistance, that means top surface is less abrated, and flexural strength of the higher for the same grade of the concrete due to the stronger aggregate matrix, and the advantages can be taken in reducing the pavement thickness due to the greater flexural strength. That means normally rigid pavement concrete minimum strength is 1 feet. 1 feet means 30 centimeters, 300 mm. Suppose normally if in case of the high performance concrete, the code permits IRC 44 allows even 25 centimeters, 25 centimeters. That means 5 centimeters throughout the 800 kilometers length. If you are reduced the 5 centimeters, that means 50 mm, lot of the cost will be reduced. Next, examples of the hydropower plants. Hydropower plants, let we see. The high performance concrete and shotcreting in the water resources sector, also some cases we can go. Next, for applications of the water resource sector, the following properties are important. If you are using for the dams and spillway gates, spillway, etc. cases, portions, the high abrasion resistance is required, because now you see in the background photograph, this is the Nagarjuna Sagar project. So this downstream side, tremendous currents will be generated when the floodgates are opened. Next, high impact resistance. This water may be just like fall with the very heavier tons. That means 1 cubic meter of the water weight is 1 ton. Okay, this 1 ton weight, it is coming falling from a height of 50 meters. That means this dam height is 50 meters. If this 1 ton weight is tremendously fall down from a 50 meters height, lot of impact may be taken care by this dam section at the bottom soil.
For that purpose, they will generally put the tile race. Tile race. That means tile race is a very deeper lake. They are provided the downstream, so they will act as a water cushion. That means water ko water takrati hai, that energy will be dissipated. Next, high post cracking endurance and toughness material and capacity of the absorb the large deformations. These are the basic requirement for the if you are using the high performance concrete in case of the water resources sector, especially dams and areas of the applications of the high performance concrete. High performance concrete for the location subjected to the abrasion impact. That means especially intake of the water flow sections and sluice gates and stilling basins in the spillways, and strengthening and repair of the spillway gates and sluice gates and stilling basins and factory floors and railway platforms where the abrasion is the top surface is abrated frequently. Next, areas of applications continued. As a fiber reinforced shotcreting is also sometimes they are applied for the rock and the slope stabilization, for the immediate and the permanent roof support, for the underground caverns like the powerhouse transformers and halls. That means recently Sri Salem powerhouse caverns has caught the fire accident. Caverns मतलब क्या है, जो पावर हाउस में जो डेप्थ में मतलब ग्राउंड लेवल से वेरी ग्रेटर डेप्थ में जो भी आप ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगाता है, दैट मीन्स पेल्टन व्हील कैप्लान टर्बाइंस लगाता है, वो एरिया को कैवर्न्स बोलते हैं. So desilting chambers and sedimentation chambers and lining of the tunnels. In these cases, you generally use the fiber reinforced shotcrete as a form of the high performance. Here the fibers also they have used in the high performance concrete. And abrasion resistance concrete and other applications of the high performance concrete, let we see. Now you see how the water is coming from this is nothing but your Sri Salem project. Sri Salem project. Sri Salem project is a very 80 meters height. This height is around 80 meters height. In this 80 meters height, if this much all the 12 gates are opened at a time, how much tremendous wave currents will be formed in the downstream side, the slope portion, because now you see this is the slope portion. The slope portion generally abrated much. That means this is also a turbid water. In case of the rainy season, the water is just like a tea color. That means a brown color. That means a lot of weight this water is having, because of this turbidity, lot of silt content is also there. So the lot of erosion maybe takes place. So the concrete repair for the Kaujia Dam USA में, that means the repair purpose they have used this cement 380 kg, silica fume 70 kg, water 150 kg, admixtures silica fume is 6 kg and water binder ratio 0.23, slump 250 mm. That means very high. And the compressive strength at the 28 days, how much they got? Around 90 MPa. That means this is M90 grade concrete. Because of this concrete repair work in the USA, dam repair purpose ke liye, they have used the 90 MPa compressive strength. Very, very high rich mix there. And the abrasion resistance loss is 3% by mass. Suppose they have tested the sand blasting method, the cube is abrated not more than the 3% by weight of the total weight. Actually in this abrasion erosion है, मतलब sand blasting method से करते हैं. ये टेस्ट है अपना लैबोरेटरी में नहीं है, मैंने बल्लभगढ़ में देखा, MCVM है ना, नेशनल बिल्डिंग मटेरियल साइंस काउंसिल लैबोरेटरी में. मतलब उधर क्या करते हैं, मतलब एक सैंड है ना, जस्ट लाइक टैप जैसा नल जैसा छोड़ता है, जो सैंड है दे आर लीविंग द सैंड एट ए ट्रेमेंडस स्पीड फ्रॉम द टॉप, so that the cube is rotating continuously. If the sand is blasted on that means it is impinged just like a jet, the top surface of the cube is abrated. What that means, after 30 minutes, how much cube is abrated? That means top surface of, because one side you are pouring the sand continuously with a high pressure. Because of that abrasive action of the sand pouring, that means the top surface of the cube is eroded. That means initial weight is, for example, say 6 kg is the initial weight of the cube. After 30 minutes, they will measure once again the weight of the cube. That means some material is lost. So that material lost should not be more than the 3%. That means more than 3%, the top material is eroded means what? That is not a abrated material. Okay, that is not the abrasive resistance material. For that purpose, they have generally go for a concrete strength of 90 MPa. 90 MPa. 90 MPa means, imagine, that means how much very
rich mix this was. Okay. Now, mixed design for the M20 and A20 concrete. A20 means this is the aggregate size. By using the aggregate 20 size, they have made that means 20 That means 20 M20 grade concrete. That means PSC cement, Portland slag cement, 350 kg, silica fume at 20% max, and water is 185, because water very high quantity they are using, because this is M20 grade concrete. So that's why they are not at all used any other admixtures except silica fume of the 20. That means 20 divided by 350, very minute. That's why next super plasticizer 1.5% by the weight of the cement, and coarse aggregate 1050 kg, and water binder ratio 0.5. 0.5 is a very high water cement ratio. But to maintain this lump, there. But generally, they have used the 1.5% of the super plasticizer, but no need for this. As per my knowledge concerned, in the M20 grade concrete, we don't go for the super plasticizer, because now you see, that means 0.5 water cement ratio they are using, and they are using the 186 liters water. Normally 186 liters is the limit given in the IS 10262 code. Then there is no need of the super plasticizer. But why they are used? Maybe they are expected more slump. That means normally if you use the without the soap plasticizer, you may get up to 75 slump or 100 Generally field we need 100 slump. Normal range of the today's context, the normal slump is, actual slump is 100 is needed in the site as on today. That means today year is 2020. 2020, if you are using the site worker, they are generally asking about the 100 slump. If 100 slump is there, they will accept. So for that 100 slump, I hope this 0.5 water cement ratio is too much good. That means it is excellent. That means M20 grade concrete. But why they are using the soap blaster, I don't know. This mixed design for the concrete is HRT in the Tala that means this hypo power plant. Next, mixed design for the M40 grade concrete and A20 grade, that means aggregate maximum size NMA. Nominal maximum size of the aggregate is 20 this case you can go for the soap class size. That means in this soap class size they are used the 0.7%. But this is a PCE based. PCE is a very good. That means polycarboxylic ethers. This is nowadays latest material. Okay na? So agar PCE base use kiya to 1.5 hai. Normally we can use in the M60 grade concrete. M60 grade concrete में मतलब मैंने कितने use किया? मैंने मेरा work में 1.2% ही use किया. I have made around the M80 grade concrete. M80 grade concrete में मैंने PCE based AC30 Glenium BASF company soap plaster use किया है. I have achieved the 87 MPa in 28 days. 28 days में मेरे को तो 87-88 MPa आ गया था. I have went for the 1.2% soap plaster, but that is the PCE base. PCE base is a very good material. Next to coarse aggregate में भी 10 425 kg and 20 मतलब 575, approximately 50%. Fine aggregate 800 and water है, they are reduced. Now you see the water है मतलब पानी कम कर दिया, क्योंकि M40 ग्रेड ना, पहले M20 ग्रेड कंक्रीट में वो लोग कितने मैक्सिमम लिमिट ले लिया 186 लीटर ले लिया, बट M40 ग्रेड कंक्रीट में 20 लीटर कम कर दिया, बट सोफ्ट क्लास देखो 0.75%. नेक्स्ट सिलिका फ्यूम है 30 kg एंड सीमेंट है पीपीसी सीमेंट, मैक्सिमम लिमिट है 500, पीपीसी है 500 तक जा सकता है. अगर वो पीसी यूज किया तो आप है मैक्सिमम 450, दैट इज द लिमिट गिवन इन द IS 456. ओके ना. नेक्स्ट concrete for the upstream side face of the dam in the acidic environment. In this case, the cement PPC is 300 kg, silica fume 78%, water binder 0.35, and external barrier or protection is yes, and permeability 500 coulombs. That means RCP test है. RCP test में मान लीजिए उसमें limits दे रखा है, less than 500 coulombs, this is a excellent concrete, and up to 1000 medium concrete, and more than 2000 then worst concrete. That means rapid chloride penetration टेस्ट. दैट मीन्स ये क्लोराइड आयंस है, अगर आपने मेजर इन टर्म्स ऑफ 60 एम्पियर करंट है, दे आर पासिंग ऑन दी, एक साइड है NaCl एंड दूसरा साइड है NaOH सॉल्यूशन मेंटेन करता है, एक 50 mm का डिस्क काट के लगाता है. RCPT टेस्ट में वो इक्विपमेंट अपना लैबोरेटरी में है ना, वी आर हैविंग दैट इक्विपमेंट, दैट्स कॉस्ट इज 10 lakhs. दैट मीन्स RCPT इक्विपमेंट है. मैं और कांचनमाला मैडम का जब PhD किया ना, उस समय मंगवाया था डिपार्टमेंट के लिए, तो 10 lakhs इट्स कॉस्ट इज 10,50,000.
ओके, दैट इज हमारे टाइम में मंगवाया था 2008 और समथिंग 2010 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, वो मिशन है अभी अपना लैबोरेटरी में है। ओके, वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट है ना। इसमें आरसीपीटी टेस्ट करते हैं। वो आरसीपीटी में क्या करता है, 50 mm का एक डिस्क बना देता है, पहले सिलेंडर्स बना के फिर उसको मतलब वो लोकी जैसा काट देता है, काट के डिस्क बनाता है। दैट मीन्स 100 mm डायमीटर एंड 50 mm थिक। वो डिस्क बीच में लगाता है, एक साइड रिजर्वायर है, दैट मीन्स सैंपल है, मतलब वो NaCl एक साइड एंड NaOH एक साइड पोर करता है। फिर इसके बाद 60 एम्पियर करंट है, मतलब छोड़ देता है। फिर वो सेल में क्या है, आयन से एक्सचेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स क्लोराइड आयन है पेनिट्रेट हो जाएगा, दैट मीन्स वो डिस्क के अंदर। दैट मीन्स अगर वो पेनिट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स यू आर पासिंग 60 एम्पियर्स करंट, फिक्स्ड करंट, दैट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कूलम्स, है ना। अगर आपका जो कूलम्स है 500 कूलम से कम है, दैट इज ए वेरी गुड कंक्रीट। अगर आपका जो कूलम्स है 500 को 1000 के बीच में है, दैट इज ए मीडियम टाइप कंक्रीट, दैट मीन्स दैट इज ए मीडियम ड्यूरेबल कंक्रीट, दैट मीन्स। एंड 2000 के ऊपर 4000 ऊपर के ऊपर है कूलम्स आ गया, देन दैट इज ए वर्स्ट कंक्रीट। दैट मीन्स अगर आपने M10 ग्रेड कंक्रीट, M20 ग्रेड कंक्रीट के ऊपर आरसीपीटी करिए, आपका जो भी वैल्यू आएगा ना 3000 कूलम्स आ जाएगा, 3200 कूलम्स आ जाएगा, उतना नहीं आना चाहिए। अगर आपने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपने टेस्ट करो, आपका जो भी वैल्यू है ना 300 कूलम्स आता है। 300 कूलम्स मतलब है लेस देन 500 ना, सो दैट इज ए एक्सलेंट ग्रेड कंक्रीट। सो दिस आरसीपीटी टेस्ट इज नॉर्मली फॉर द ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी नापने के लिए आरसीपीटी टेस्ट करते हैं। ये आरसीपीटी टेस्ट में ये जो वैल्यू है आपको कूलम्स में दिया रहेगा, है ना। वो कूलम्स है 500 से लेस देन है तो गुड कंक्रीट। ओके, फाइबर रीइंफोर्स्ड शॉटक्रीट, फाइबर रीइंफोर्स्ड फाइबर्स, बिकॉज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, नाउ यू सी दिस इज ए वेरी थिन lining they are made for the this downstream side of this dam. Okay na, this is especially in the Jammu Kashmir etc, they have allowed the 20 meters height dams. Okay na, at that time they are using this thin lining, because why, how this thin lining is allowed, because this upstream, this other side is, this is a completely a rock fill area, this is the entirely hilly ghat section. Okay, this hilly ghat section, this thin sections is allowed, but fiber reinforced shotcreting should be given at the from the outer periphery. Outer periphery में fiber reinforced shotcreting कर रहे हैं। shotcreting मतलब है with high pressure they will apply the cement grouting, so that is called the fiber reinforced shotcrete. Next, फाइबर रिइंफोर्स्ड शॉटक्रीट फॉर द रॉक सपोर्ट, दैट मीन्स जो भी ये कैविटीज रहते हैं, मतलब जो फिशर्स रहते हैं, इसको तो क्या करेगा, दैट मीन्स वो लोग है, मतलब वो हाई प्रेशर से दैट मीन्स ये फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है, फाइबर रिइंफोर्स्ड शॉटक्रीट है, मतलब ग्राउटिंग करेगा। दैट मीन्स जो भी फिल मतलब छोटा छोटा कैविटीज है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। द टनलिंग in the extensively jointed hard rock masses that are drilled and blasted, fiber reinforced shotcrete has been replaced the plain cement concrete plus wire mesh. ये लोग क्या करेगा, पहले वायर मेश, जस्ट लाइक मछली पकड़ता है ना, ऐसा नेट, एक नेट है, दे विल स्प्रेड ऑन दी दिस टनल एरिया। दैट मीन्स इस एरिया में क्या करेगा, वो आयरन नेट है ना, मेश है, मतलब वो मेश है, दे विल जस्ट प्लेस इट एंड आफ्टर दैट नेलिंग करेगा, बड़ा बड़ा कील लेके इसके अंदर है ना, मतलब वो नेट को कंप्लीटली फिक्स कर देता है। इसके बाद क्या है, वो लोग है ना फिर शॉटक्रीटिंग शुरू कर देता है। नेक्स्ट, in the poor rock mass quality there is a deformation in the jointed or the weak rock after the excavation, because आपने जब टनल है मतलब बनाओगे, जो डायमंड पॉइंट और कटिंग पॉइंट यूज करेगा, वो पॉइंट है ना कटिंग का टाइम में क्या है, वो अगल बगल का जो भी टनल का आउटर पोर्शन है, पेरिफेरी है ना, वो भी कैविटीज बन जाता है, लूजन हो जाती है, समझ गया ना, क्योंकि एग्जैक्टली काटती नहीं है, क्योंकि जरा जरा राउंड घूमती रहती है। एट दैट टाइम क्या है, अगल बगल का जो भी पोर्शन है ना वो भी हिल जाती है, सो दैट टाइम मतलब ढीला पड़ जाती है। फिर उसको क्या करना, फिर आप है मतलब लाइनिंग करना पड़ेगा। लाइनिंग करने के बाद फिर मेश लगा के, दैट मीन्स स्टील वायर मेश यूज करके फिर उसको ग्राउटिंग करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन, क्योंकि ओरिजिनली मतलब उसका बहुत स्ट्रेंथन है, बिकॉज आपने एक्सटर्नल फोर्स यूज करके, ताकत यूज करके ग्राउटिंग ड्रिल किया है, मतलब डायमंड पॉइंट बिट से ड्रिल किया है। मान लीजिए रेलवे टनल बनाना, भाई ट्रेन है उसी से अंदर से जाएगा पहाड़ का नीचे से, एट दैट टाइम कितने बिग ये है, अराउंड 6 मीटर डायामीटर,
6 मीटर डायमीटर का जो बोर होल है, मतलब एक बड़ा डायमंड पॉइंट रहती है मेगा स्ट्रक्चर्स में, देखो प्रोग्राम्स है नेशनल जियोग्राफी में, वो डायमंड पॉइंट है घूमती रहती है। एट द टाइम के अगल बगल का जो भी पहाड़ है ना हिल जाती है, सो दैट मीन्स लॉट ऑफ कैविटीज, लॉट ऑफ फिजर्स, लॉट ऑफ क्रैक्स है, मतलब एडजेसेंट लैंड में गिर जाता है। अगर आपने सही से उसको मतलब वो रेक्टिफाई नहीं करोगे, मतलब कुछ दिनों के बाद ट्रेन चलता रहेगा, मतलब वाइब्रेशन आ जाएगा, ट्रेन चलने के बाद पूरा पूरा पहाड़ है ना ट्रेन के ऊपर गिर जाएगा। टू अवॉइड दैट व्हाट दे विल डू, दे विल जनरली पुट दी लाइनिंग, मतलब शॉर्ट क्रीटिंग लाइनिंग करता है। लाइनिंग है सो मेनी टेक्निक्स है ना, मतलब वो 20 mm to 100 mm, 100 mm मतलब है 10 centimeter, इमेजिन करो इन दी 10 meter स्पैन। फ्लेक्सुरल लेयर्स ऑफ द फाइबर reinforced shotcrete with the rock bolting are used, मतलब जस्ट दे विल मतलब पुट ए वायर मेश, वो वायर मेश को कीलिंग कर देता है, नेलिंग कर देता है, बड़ा बड़ा नेल्स है, मतलब ड्रिल करके अंदर है, मतलब वो एक डेप्थ तक है, मतलब पहुंचने के बाद है ना उसके ऊपर है ना फिर ये लोग है ना शॉर्ट क्रीटिंग करता है, मतलब जस्ट फाइबर्स एंड ये कंक्रीट है ना वेरी हाई प्रेशर से मतलब उसके ऊपर है ना अप्लाई कर देता है, वेरी क्विक सेटिंग सीमेंट टाइप, सो दैट है मतलब ओरिजिनल इनिशियली मतलब वो कितने ताकत है वो टनल में ये सब वापस लेके आता है। अगर इतना नहीं किया है मतलब टनल विल बी कम अंडर द डेंजर। Steel fibers are commonly used, and however, polypropylene fibers are better when deformations are large. Generally, polypropylene fibers, PP fibers है reinforced, that means ये इसमें यूज करते हैं, किसमें पेमेंट्स में यूज करता है, क्योंकि स्टील फाइबर से जार नॉर्मली हाईवे पेमेंट्स में यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कोई आदमी है ना सड़क पे गिर गया है, उसका बॉडी के ऊपर है ना ये पूरा फाइबर से छील लेती है, दैट मीन्स स्क्रैचेस कर देता है। सो टू अवॉइड दैट पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स ओनली अलाउड इन केस ऑफ द पेमेंट्स, बट इन केस ऑफ द स्टील फाइबर्स यू कैन गो फॉर द अनदर एनी कॉलम्स है, बीम्स है, स्लैब्स है एंड ये टनल्स है एक्सेट्रा केस में आप स्टील फाइबर्स नॉर्मली वी कैन गो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द रॉक मास क्वालिटी, दिस इज आपका लाइक का नहीं है और जरूरत नहीं। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ द शॉटक्रीट इन द टनल, in the tunneling the main load bearing elements are the surrounding rock mass. The surrounding rock mass will be strengthened by using the shotcreting. The preliminary support and the final lining of the fiber reinforced shotcreting have the confining the role only for the strengthening the rock mass by filling the joints and fractures and fissures, and कहाँ पे क्या cracks है, cavities है और ज्यादा एक्स्ट्रा टूट गया है ना, क्योंकि आपने जब भी वो डायमंड पॉइंट से कट करोगे 6 मीटर डेप्थ, अगल बगल में ना एग्जैक्टली सीधा नहीं काटती है, मतलब थोड़ा बहुत है ना एक्स्ट्रा गिर जाती है, एक्स्ट्रा दैट मीन 6 मीटर गिरना चाहिए, लेकिन 7-8 मीटर है, एक बोल्डर बड़ा बोल्डर है नीचे गिर जाती है, उसको क्या करना है वापस मतलब एग्जैक्टली फिर वापस बिठाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एक्टिंग एज ए मेम्ब्रेन इन दी बेंडिंग एंड टेंशन। Next, what is this arrangement of the fiber reinforced and the rock bolts? Now you see, ये देखो ये shotcreting देखो, ये बोल्ट देखे रॉक बोल्ट एंड केबल्स है एंड रॉक नेक्स्ट ब्लॉक्स है, ये देखो ये कीलिंग कर देता है, दैट मीन्स ये स्पैन है, फॉर एग्जांपल ये 6 मीटर स्पैन में क्या है, ये आयरन नील्स है, वेरी ग्रेट डेप्थ तक है, आयरन बोल्टिंग कर देता है, बोल्टिंग करके ये एक मेश डाल देता है, आयरन मेश, ये मेश के ऊपर ये लोग है ये फाइबर रिइंफोर्स्ड शॉटक्रीटिंग है कर देता है, दैट मीन्स ये रॉक ब्लॉक है, ये ऊपर से नीचे गिरना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस शॉटक्रीटिंग एंड ये आयरन नट बोल्ट है, मतलब वो अंदर तक फंसा दिया, बड़ा बड़ा कील मान लो, कील जानता होगा हिंदी में, कील मतलब है मतलब धागा बांधने के लिए, रस्सी बांधने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए करता है ना, फिर ऐसा ये नेल देखो कितने लंबी नेल है, 3 or 4 मीटर्स डेप्थ ऑफ नेल्स है, मतलब बड़ा बड़ा नेल है, मतलब ये ग्रेट डेप्थ तक है, मतलब पहुंचा देता है, फिर इसके बाद ये आयरन मेश के ऊपर है, मतलब वो लोग है ये शॉटक्रीटिंग डाल देता है, तब मतलब ये जो भी ये बड़ा पत्थर है नीचे गिरेगा, क्योंकि ये जो ऐसा हार्श शू शेप में, दैट मीन जस्ट लाइक ऐसा फ्लैट रहती है, फिर ऐसा हार्श शू शेप में ऐसा टनल रहती है, ये टनल को मतलब ये लाइनिंग है ना प्रोटेक्ट करती है, अगर ये लाइनिंग नहीं है ना, ये बोल्डर से पूरा मतलब ट्रेन के ऊपर गिरेगा। नाउ यू सी, नाउ ये फिगर को समझने के लिए कोशिश करो, ये एक्चुअली देखो डेस्टिलिंग चैम्बर ऑफ द टिपिकल, मतलब नीचे रिसेंटली ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट है नियर बाय हैदराबाद, है ना, ये तेलंगाना सरकार ने ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, दैट मीन्स ये गोदावरी रिवर के ऊपर है ना, वो पूरा ये टनल है ना, ये टनल अराउंड 16 मीटर्स वाइड, ये टनल का जो भी डायामीटर है ना 16 मीटर डायामीटर, दैट मीन्स एंटायर जो पावर प्लांट है
कम से कम 50 मीटर डेप्थ में बन गया था। दैट मीन्स एंटायर पावर स्टेशन है ना 50 मीटर्स, इमेजिन करो 50 मीटर्स है ग्राउंड लेवल से नीचे कर दिया है। दैट मीन्स कितने बड़ा बिग हाउस, दैट मीन्स अराउंड 10 मंजिल का बिल्डिंग है, मतलब कितने बड़ा रहती है ना। दैट मीन्स 50 मीटर्स बाय 50 मीटर्स एंड 50 मीटर्स हाइट, इमेजिन करो दैट मच बिग बिल्डिंग दे हैव मेड एट ए अंडरग्राउंड में बन गया है, अंडरग्राउंड में। सो ये टनल देखो, ये शॉर्ट क्रीटिंग किया है देखो, मतलब जब भी ये कट गया है, ये 6 मीटर, इसका जो डायमीटर है 6 मीटर है, इसमें से पानी जाएगा, अदरवाइज ट्रेन जाएगा, बसेस जाएगा, अदरवाइज हाईवे जाएगा, कुछ भी हो। ये टनल है, गुहा है ना। ये टनल में ये 6 मीटर्स में नाउ देखो, ये लाइनिंग, ये शॉर्ट क्रीटिंग, ये शॉर्ट क्रीटिंग है कंक्रीट। क्योंकि अगर ये शॉर्ट क्रीटिंग सही से नहीं किया, दूसरा प्रॉब्लम क्या है पता है, इस साइड से पानी पेर्कुलेशन करेगा, दैट मीन्स ये सीपेज आ जाएगा, मतलब अगल बगल, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है, तालाब होगा। दैट मीन्स अबव दी अपस्ट्रीम साइड ऑफ दिस हिल्स देयर इज ए लेक। वो लेक से मतलब धीमे 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 कैविटी से ये पूरा टनल के अंदर पानी भी आ जाता है, समझ ना। एक साइड है ये मिट्टी उट्टी ये सब है, हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद तब रेलवे ट्रैक बनाना पड़ेगा। मान लीजिए समटाइम्स ये टनल के अंदर है, डबल लेन फाइन करना है, इफ यू वांट टू ले डाउन द डबल ट्रैक, रेलवे लाइन है डबल ट्रैक, दिस इज एक्चुअली सिंगल लेन का है। अगर करना ही है, मतलब ये टनल का विड्थ कितने होगा, बहुत बड़ा होगा। दैट मीन्स इफ यू आर, आपने ऐसा मतलब डायमंड बिट से ये 6 मीटर्स का बोर कट करता रहोगे, मतलब एग्जैक्टली 6 मीटर तो टूटेगा नहीं है, 6 मीटर से ज्यादा टूटेगा। सो ये एडजस्ट है, मतलब देखो कितने स्मूथ प्लास्टरिंग किया। ये प्लास्टरिंग नहीं है एक्चुअली, ये नेलिंग किया है। नेलिंग करने के बाद मतलब मेश, आयरन मेश है, जस्ट लाइक नेट जैसा मछली पकड़ता है ना, मतलब देखो, मतलब फिशरमैन है, मछली पकड़ने के लिए एक नेट यूज करता है ना, सेम नेट है, आयरन नेट है। आयरन नेट को मतलब दे विल मतलब स्प्रेड ओवर दिस शेप एंड आफ्टर दैट शॉर्ट ट्रीटिंग है, हाई प्रेशर शॉर्ट ट्रीटिंग है विथ क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करके मतलब कर देता है। Okay. Now design approach for the fiber reinforced shotcreting. That means steel fibers reinforced shotcrete with the rock bolting for the roof support has been used, and the toughness is more important property of the fiber reinforced shotcrete, and the test for this toughness. That means ASTM 1018 मतलब they are saying that that beams may be tested. That means flexural strength है, generally beams के ऊपर है टेस्ट है। एंड एफनार का, यूरोपियन यूनियन का एफनार कमिटी है, वो लोग है 600 mm स्क्वायर्स के ऊपर है, मतलब ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट करता है। नेक्स्ट 100 mm थिक पैनल्स, नेक्स्ट राउंड determinate panels also ये FNARC people generally used. That means FNARC 25 mm joints, that means joists, and RDP 40 mm joists also they can tested in case of the FNARC people. That means in India we are generally flexural strength we are tested on the normally 700 mm length and 100 mm thick and 100 mm thick. Normally two types of the beams बनता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। एक है 700 लेंथ का बीम बनती है, एक है 500 लेंथ का बीम बनती है। 500 लेंथ बीम है नॉर्मली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट फ्लेक्सुरल टेस्ट करने के लिए, अगर 700 है नॉर्मल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल कंक्रीट बनाने के लिए यूज करता है। मेरा वर्क में मैंने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट किया है, इसलिए मैंने 500 mm आधा मीटर का बीम्स कास्ट किया है। दैट मीन्स क्रॉस सेक्शन इज 100 by 100 by 500. That beams I have tested. Okay. Correlating Q system and FRS performance. That means this rock class है, F class, A class, B class rock system है, ये FNARC people is giving the correlation system for the fiber shotcreting. That means RDP 40 mm and RDP 80 mm and PB polypropylene fiber यूज किया है एंड स्टील फाइबर यूज किया है। दैट मीन्स ये क्या है, दैट मीन्स दे आर यूज दिस नेट। दैट मीन्स ये RDP मतलब क्या है, दिस इज द नेट साइज। नेट साइज मतलब 40 mm, दैट मीन्स स्क्वायर बॉक्स रहती है। दैट मीन्स जो भी नेट यूज करेगा दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर नेट यूज करता है। समटाइम्स शॉर्ट क्रीटिंग में क्या है, PB फाइबर्स यूज करते हैं, समटाइम्स स्टील फाइबर्स। अगर जो नेट का साइज है 80 mm है देन ये लिमिट रखेगा। अगर रॉक का साइज है, क्योंकि वो जो भी पत्थर है मतलब वो आपका जो रॉक टाइप है, F टाइप, E टाइप एंड D टाइप डिपेंडिंग अपॉन दी
दैट मीन्स ये 10% फाइन्स वैल्यू बेसिस पे रॉक्स को मतलब ए क्लास रॉक, बी क्लास रॉक, सी क्लास रॉक अरेंज करते हैं। फिर अगर एफ क्लास रॉक है, दैट मीन्स एफ क्लास रॉक है मतलब वो दे आर यूज्ड, दिस इज ए वेरी पुअर टाइप ऑफ रॉक। इस केस में क्या है आपको दैट मीन्स 11.5 kg पर क्यूबिक मीटर फाइबर्स आर यूज्ड। दैट मीन्स ये जो नेट साइज यूज किया है 80 mm नेट साइज, इस केस में क्या है 840, दैट मीन्स 840 ग्रेड, दैट मीन्स आरडीपी नेट यू हैव टू गो फॉर दैट। दिस इज द मतलब शॉर्ट क्रीटिंग का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द फाइबर reinforced short creating for the roof support in the caverns। caverns मतलब है एज आई टोल्ड यू पावर प्लांट में नागार्जुन सागर है ना, श्रीशैलम प्रोजेक्ट में अगर ग्राउंड लेवल से वेरी ग्रेटर डेप्थ में मतलब अगर आपका पावर हाउस बन गया, क्यों पावर हाउस है अंडरग्राउंड में क्यों बनता है? बिकॉज आपका जो भी पेन स्टॉक है हाइट से पानी आ गए तो टर्बाइन बहुत तेजी से घूमता है, क्योंकि आपका डैम हाइट है कम है भाई। मतलब मान लीजिए नागार्जुन सागर डैम का हाइट है 45 मीटर्स ओनली, मात्र 45 मीटर। श्रीशैलम डैम है 88 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। सो श्रीशैलम डैम को कोई दिक्कत नहीं है। श्रीशैलम डैम का जो पावर हाउस है ना मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर ही बनता है, ऊपर ही बन गया। लेकिन है ना नागार्जुन सागर का एंड कालेश्वरम प्रोजेक्ट का क्या हुआ था, वो जो डैम का हाइट कम है इस वजह से क्या किया था वो लोग अंडरग्राउंड में एक बड़ा बिल्डिंग बन गया था, एक बड़ा बिल्डिंग बना दिया। वो बिल्डिंग के अंदर मतलब वो आपका जो पावर हाउस इंस्टॉल किया है, रिसेंटली आग लग गया है। मतलब दे आर कॉट विद लॉट ऑफ टर्बाइंस एंड पावर पैनल्स, 10 लोग मर भी चुका है। दैट मीन 10 lakhs एक्सरेशिया दिया है सब इंजीनियर्स वगैरह। मतलब पैनल में मतलब धुआं आ गया था, मतलब पूरा दे आर कॉट बाय एक्सीडेंट रिसेंटली। दैट मीन्स 3-4 months का बैक है न्यूज में, है ना, तेलंगाना सरकार में ये एक्सीडेंट हुआ था बिकॉज कंप्लीटली अंडरग्राउंड में है। फिर वो लोग बाहर आने के लिए तो लिफ्ट भी काम नहीं किया क्योंकि पावर हाउस में आग लग गया। पूरा एंटायर वो जो भी अंडरग्राउंड में जो भी बिल्डिंग है कंप्लीटली दे आर कॉट विथ द स्मोक। जैसा स्मोक आ गया था वो लोग 3-4 मिनट में बेहोश हो गया सारे, 1 lady and 9 gents, all 10 people were dead। okay, now the compressive स्ट्रेंथ ऑन द कोर्स 3 days में 10 MPa आना चाहिए, 7 days में 18 MPa आना चाहिए, दैट मीन्स 28 days में 30 आना चाहिए। दैट मीन्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है 3.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए, टफनेस फैक्टर है 2.4 आना चाहिए। बॉन्ड इन केस ऑफ दी मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स पुलिंग, अगर आपने सरिया है अंदर रख दिया, आपने पुल कर दिया है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ है एटलीस्ट 1 MPa से ज्यादा होना चाहिए। दिस आर द रिक्वायरमेंट फॉर द फाइबर रीइंफोर्स्ड शॉटक्रीट। अगर आपका जो कंक्रीट में 28 दिन में 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम चाहिए, आपका तो 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आना चाहिए एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। इन दैट केस ओनली यू कैन यूज इट फॉर द शॉटक्रीटिंग। हाँ सर, हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके, हाँ ओके, हाँ ओके। दिस आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनल, दैट मीन्स फाइबर रीइंफोर्स्ड शॉटक्रीट। नेक्स्ट ये कैवर्न्स के लिए, कैवर्न्स मतलब है जो अंडरग्राउंड में जो भी स्ट्रक्चर्स बना हुआ ना उसको कैवर्न्स बोलते हैं। दैट मीन्स ग्राउंड लेवल से वेरी डीप और डेप्थ में रहती है, उसी को कैवर्न्स बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रायल मिक्स फॉर दी एनजेपीसी एडॉप्टेड इन दी एनजेपीसी। दैट मीन्स ये नागार्जुन सागर पावर कॉर्पोरेशन है, मतलब इसमें एक ट्रायल मिक्स है, दे आर मेड विद दिस ट्रायल मिक्स। दैट मीन्स सीमेंट है 482 kg, दैट मीन्स दिस इज ए पीपीसी, है ना। ओपीसी है तो 450, सो दिस इज ए पीपीसी है, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड 482। दैट मीन्स सिलिका फ्यूम 28, दैट मीन्स 5.6%। नेक्स्ट वाटर बाइंडर रेशियो 0.41। एक्सेलरेटर्स that means 4.6 of the cement plus silica fume. Super plasticizer 1.7%. That means steel fiber 60 kg. This type of the mix is used in the Nagarjun Sagar power plant में ये mix use किया है दे लोग। This is the typical mix. Next standardization. Standardization मतलब है IRC Special Publication 70/2004 code is saying some standardization. That means type of the cements permitted is OPC 43 and 53 grade and rapid hardening Portland cement, sulfate resisting cement and low heat Portland cement and PPC cement and Portland slag cement. These type of the cements nowadays widely used and these cements are permitted by the IRC Special Publication 70/2000 guidelines for the use of the high performance concrete in case of the bridges.
अगर आपने ब्रिज काम के लिए यूज कर रहा है, ब्रिज में हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, जनरली ब्रिज का जो डेक स्लैब है ना, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज करता है। मान लीजिए नॉर्मल मैं एक चीज बताता हूँ, कंक्रीट रोड बना रहा है, नॉर्मल जमीन के ऊपर है कंक्रीट रोड है ना, नॉर्मली M40 ग्रेड कंक्रीट यूज करता है भाई, नॉर्मली M40 ग्रेड कंक्रीट है डालते हैं पेवमेंट में। लेकिन जैसा ब्रिज आ गया उसके लिए मतलब ये कंक्रीट है यूज ही नहीं करते, उसमें तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज करता है, क्योंकि उनका थिंकिंग क्या है, ब्रिज के ऊपर है, रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक है, बिल्कुल मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो होना चाहिए, मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट डालता है। इसके लिए तो अलग कंक्रीट बनाता, अलग कंक्रीट मतलब है ये फाइबर रीइंफोर्स्ड शॉटक्रीट है ना, हाई परफॉर्मेंस बोलो, उसमें तो पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर यूज करोगे, मतलब कुछ भी डालोगे, लेकिन हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट ब्रिजेस के लिए यूज करो। बट ब्रिजेस के लिए दीज टाइप्स ऑफ सीमेंट्स आर परमिटेड बाय द IRC Special Publication 70. IRC Special Publication 70 is a bridge code. Actually, that is a bridge code. Bridges में वो है। नेक्स्ट मिनरल एडमिक्सर्स क्या क्या यूज कर सकता है, इफ यू आर यूजिंग द ब्रिज डेक स्लैब, आप है फ्लाई ऐश यूज कर सकता है, GGBS यूज कर सकता है, ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड सिलिका फ्यूम यूज कर सकता है। एंड ये क्वेश्चन में भी अराइजेस वेदर दीज मिनरल मिक्सचर्स आर टू बी यूज्ड ओनली विथ OPC और कैन बी यूज्ड इन द PPC एंड स्लैग सीमेंट। यस, बोथ आर परमिटेड nowadays। olden days में क्या है, OPC plus the fly ash they have mixed in the field, in the factory, but nowadays they can permitted in the field also, that means site also you can go for the PPC cement, that means आप OPC मंगवाइए, साइट पे आप ये मिनरल्स है ऐड कर सकता है, that means आप both ways you can allow nowadays। next, test for durability। test for durability, as I told you, this is the ASTM-C 1220 required, this is the RCPT values। RCPT values है, अगर 500 से लेस देन है, 500 से लेस देन है, that is said to be a very good concrete। 500 to 1000 है, it is a medium type, and more than 4000 है, it is worst। if you go to the detailed exactly as per the ASTM C121202 code, these are the values। बट नॉर्मली हमें मतलब एज पर द इंडियन कोड्स वी आर कंसिडर ओनली 3, लेस देन 500, लेस देन 1000 एंड लेस देन 2000, बस as per Indian code। But nowadays RCPT is originally designed by the ASTM code, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द टेस्टिंग मटेरियल्स। एक्चुअली ये RCPT टेस्ट है, अपना नहीं है, ये अमेरिका कोड ने डेवलप किया, इसलिए आज का तारीख में भी अधिकतर रिसर्च पेपर में ये 4 वैल्यूज दे रहा है, ये 4 वैल्यूज है, वेरी लो, लो, मॉडरेट एंड हाई। जो भी RCPT का जो भी वैल्यू है, यूनिटीज कूलम्स में आता है, कूलम्स, दैट मीन्स जो दैट मीन्स करंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, दैट मीन्स सो मेनी कूलम्स। अगर 4000 कूलम से ज्यादा आ गया RCPT वैल्यू, दैट कंक्रीट है, वर्स्ट कंक्रीट है, वो विद इन 1 or 2 years के अंदर सड़ जाएगा, दैट इज वेरी जल्दी डिटोरिएट हो जाएगा, वर्स्ट कंक्रीट है, समझे ना। दैट मीन्स 2000 to 4000 है, दैट इज ए मॉडरेट कंक्रीट, दैट मीन्स कुछ साल चलेगा, 10-15 साल रहेगा। दैट मीन्स 1000 to 2000 RCPT आ गया, RCPT मतलब है कूलम्स में आ गया वैल्यू, RCPT वैल्यू, देन इट विल वर्क अप टू ये 20 to 30 years। दैट मीन्स वेरी लो आ गया, लेस देन 1000 आ गया, दैट मीन्स RCPT वैल्यू आ गया, दैट मीन्स दैट इज ए सुपर कंक्रीट, दैट मीन्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वगैरह टेस्ट करो, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट टेस्ट करो, उसका जो वैल्यू है ना 700, 800, 300, 400 ही आती है, समझो ना। 100 से लेस देन कभी नहीं आता भाई, दैट मीन्स 100 से लेस देन पक्का RCPT वैल्यू है, क्लोराइड आयन है, पक्का इंग्रेस तो होना ही है, दैट मीन्स नॉर्मली ये 300 के ऊपर ही रहती है, दैट मीन्स डोंट एज्यूम दैट, क्योंकि दिस इज ए कंक्रीट मटेरियल, पक्का कुछ ना कुछ कैविटीज तो रहेगा, इसलिए द लिमिट है 100 से स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली आपने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, कुछ भी हो टेस्ट करो, आपका वैल्यू है 250, 300, 350 से स्टार्ट होती है। इवन मतलब वर्स्ट ग्रेड कंक्रीट में क्या है, इवन 6000 मतलब वो कूलम्स भी रिपोर्ट होता है, दैट इज अ वेरी वर्स्ट ग्रेड कंक्रीट, दैट मीन्स वो ड्यूरेबल कंक्रीट नहीं है। ओके, नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स, द स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड इन दी 100 mm cubes। Different cements and mineral admixtures will be permitted, and compatibility between cement and superplaster is emphasized, and minimum cement content and mineral admixtures are 380 kg per cubic meter,
and water cement and mineral reduction should generally less than the 0.33 and 0.4, and the coefficient of the permeability as measure the quality addition to the strength. Rapid chlorine test is required, and the emphasis on the material workmanship, strictly quality control, and class Q4 of the IRC special publication 47 1998 code will be followed in case of the bridge deck slabs and bridge codes, and prototype testing is suggested. Prototype testing मतलब क्या है? Before going to the actual placing of the concrete, you have to tested the same material in the laboratory. उसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप, है ना, एक्चुअल एंड प्रोटोटाइप. पहले आपका जो डैम है, मतलब नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, पहले लेबोरेटरी में बनाइए. मान लीजिए आउटसाइड है, मतलब डैम का हाइट है 100 मीटर है, आप लेबोरेटरी में 100 सेंटीमीटर बना दीजिए. दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग दी ऑल योर वर्क ऑन दी प्रोटोटाइप. पहले प्रोटोटाइप के ऊपर वर्क करिए. अगर प्रोटोटाइप सक्सीड हो गया, देन गो फॉर द actual online that field work, and does not cover the self compacting concrete. नेक्स्ट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मतलब है, ये नेक्स्ट क्लास आई विल टीच. सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मतलब क्या है? देयर इज नो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स फॉर द कॉम्पैक्शन. जनरली कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होती है इफ यू आर pouring the concrete in the thick sections of the beams, columns, and in case of the footings etc. To avoid that, nowadays self compacting concrete आ गया. जैसे self compacting concrete मतलब क्या है? Reinforce है, very thick reinforcement है. That means you can't pour that means put the jolting rod and vibratory mission on the inside of the concrete. At that time, the self compacting concrete is very good material. That means अपना own gravity से, self weight से concrete है water जैसा भागती है. That means pumpable concrete जैसा रहती है. That means सरिया है. मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको.